in SFR. The problem is that कि it will induce a large number of, or it will generate a large number of opcodes. Okay, और opcode जितना अगर कम दे सको उतना बेहतर होगा, क्योंकि opcode अगर आप कम जनरेट करोगे, it will, the decoding part will be much faster. सो डिकोडिंग फास्टर होगा तो नेचुरली आपका फेचिंग एग्जीक्यूशन जो होगा उसकी वजह से वो भी आपका एक ही टाइम में, एक ही साइकिल में हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको जो पाइपलाइनिंग मिलेगा दैट वुड बी अ ट्रू पाइपलाइनिंग. So in order to reduce this opcode, what we can do is we have to give them addresses. We don't give them name, but we'll give them addresses. Okay. So address देने पे क्या, क्योंकि एड्रेस जो है वो हेक्साडेसिमल के फॉर्म में होता है और वो हेक्साडेसिमल को आप बाइनरी में उसको रिप्रेजेंट कराते हो. सो एज सुन एज यू फेच द इंस्ट्रक्शन, उस इंस्ट्रक्शन के अंदर जो ऑपकोड होता है उसके आगे का जो पार्ट होता है विच इज द डेटा, वो डेटा आपको इमीडिएटली अवेलेबल हो जाता है. ओके, सो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द मीनिंग और व्हाट विच एसएफआर आर वी रेफरिंग टू. ओके, सो इसके लिए हमें बार बार एसएफआर को पॉइंट आउट नहीं करना पड़ेगा. विल बी एबल टू रिड्यूस द नंबर ऑफ ऑपकोड्स. ओके, सो अगर मुझे मूव करना होगा, so I'll be performing the move operation for all the 21 SFR by only using one opcode. Okay, but I need to just give the address of the respective SFR. Okay, so so हाँ, so अगर बाई चांस अगर मुझे पोर्ट 0 का कुछ काम है या पोर्ट 1 का काम है या पोर्ट 2 का काम है या PSW का कुछ काम है, so मैं instead of calling them by the respective name, I'll be calling the respective address. But the problem is that कि मेरा जो एड्रेस है वो एक लिमिटेड है. ओके, बिकॉज मैंने जो 8 बिट का एड्रेस है, उस 8 बिट के एड्रेस में मैंने रैम को भी एड्रेस दिया हुआ है. बट रैम को मैंने एड्रेस कहाँ से कहाँ तक दिया है, फ्रॉम वेयर टू वेयर आई हैव गिवन द एड्रेस टू द रैम, 00 to 7FH. 00 to 7FH तक मैंने उसको एड्रेस दिया हुआ है रैम को. बाकी बचे हुए जो एड्रेस है, दोज आर वेकेंट एड्रेस. ओके, इट डज नॉट मीन कि मेरा जो रैम है वो 256 बाइट का है और बाकी 7F में मैं डेटा स्टोर करता हूँ, 128 में डेटा स्टोर करता हूँ और बाकी मैं रजिस्टर के लिए यूज करता हूँ. ऐसा कुछ नहीं है. रजिस्टर्स आर डिफरेंट एंटिटी, वो रैम में नहीं होता है. दैट इज छोटे छोटे कंपोनेंट से आप आपके चिप पे आप उस रैम उस चिप पे आप रजिस्टर को पुट करते हो. ओके, सो बट सिर्फ नेमिंग के लिए, फॉर गिविंग देम एड्रेस, फॉर आइडेंटिफाइंग देम यूनिकली, आप बचे हुए एड्रेस उसको देते हो. सो बचा हुआ एड्रेस जो है वो दैट इज फ्रॉम ATH टू FFH. तो ये एड्रेस आप उन रजिस्टर्स को देते हो और इंस्टेड ऑफ कॉलिंग देम बाय देयर नेम, यू कैन कॉल देम बाय द रिस्पेक्टिव एड्रेस. सो दैट इज ऑल रिलेटेड टू SFR. उसके बाद SFR में कुछ ऐसे रजिस्टर्स भी हैं जो कि बिट एड्रेसेबल है, यानी उसके अंदर के इंडिविजुअल बिट को भी आप मैनिपुलेट कर सकते हो, आप चेंज कर सकते हो. सो इन बिट्स को मैनिपुलेट, इन इंडिविजुअल बिट को अगर आपको मैनिपुलेट करना है तो इन इंडिविजुअल बिट को भी आपको एड्रेस देना पड़ेगा. बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन bit address and a byte address. Okay, so bit address matlab will work only on the bit, whereas byte address will work on byte. Okay, so byte को पे काम करने के लिए you have to use a byte instruction, whereas in order to work on bit you have to use a bit instruction. Okay, which are self explanatory, आपको explain करने की जरूरत नहीं है. But ironically, when we have studied the architecture of the RAM, in the RAM architecture there was a bit addressable space. That bit addressable space has also got a 8-bit bit address, and that bit address started from 00 to 7FH, यानी 80H से लेके FFH से फिर से हमारा एड्रेस जो है वो बच गया. ओके, सो ये जो बचे हुए एड्रेस है which are the vacant bit address, that bit address can be used for identifying the each bit addressable registers of SFR. Was it clear? Yes. Okay, now today's topic is again one of the most important topic from exam point of view. We'll start with discussing the new topic. The new topic is called as is my screen visible? I have not shared it, right? No. Okay, one second. Yeah, so आज का जो topic है that is related to the addressing mode of 8051. Okay, so pretty important. So those who have joined late, so we'll be starting with the new topic. So you can write down the topic name as addressing mode of 8051. Okay, visible now? Is it visible? Yes, sir. Okay, so आज का जो topic है that is addressing mode of 8051. So what is addressing mode? What is addressing mode? Way of passing an operand into the instruction.
Exactly. So अगर एक लाइन में definition बोला जाए तो it is a way of passing an operand into an instruction. Okay. So what mean by operand? Operand means क्या? Operand means the data that you want to pass. Okay. So जो data जिस पे आपको calculation कराना है, जिस पे आपको operation कराना है, जिसके ऊपर आपको instruction को work कराना है, so that data that needs to be passed into an instruction. वो instruction में किसी तरह से उसको आपको pass करना है. So that way of passing into an instruction is called as addressing mode. Okay. So this addressing mode of 8051 is further classified into 5 different categories. Okay. So category 1, category 2, category 3, category 4, and the last category is category 5. Okay. It is similar as that of 8086. We'll just check whether you remember or not. So what is the first one called in 8086? Addressing mode of 8086. Do you guys remember? Immediate. Over here also we have got immediate. Okay, so the name is similar, immediate. Addressing mode I will just write down in short AM. Okay, so just assume it is addressing mode. So immediate addressing mode, which is also there in 8086, is also there in 8051. Next, after immediate comes Register. register. Also there in 8051. 8051 में भी register होता है. Okay, so register is addressing mode. Okay, after register addressing mode we have in 8086 we used to have Direct. direct. Here also we'll be having direct addressing mode. In 8051 also we'll be having direct addressing mode. Okay. Then 8086 mein one was a complicated one, which was a difficult, which has further classification into it. What was that addressing mode? It was called indirect. Okay. यहाँ पे भी we have indirect addressing mode, which is further classified. In case of 8086, it was further classified into how many categories? Do you guys remember? 4. 4. But over here it will be classified into 3 different categories. Okay. ये क्या है हम आगे देखते हैं. And then the last one over there was called as Implied. Implied. over here there will be a slight change. The last one will be called as indexed. Okay. The last one is called as indexed addressing mode. Okay, so just write down, just list down what are the different addressing mode that we have. These are the following addressing mode that we have. In indirect addressing mode, we will be having 3 classification. One is called as 8-bit address, 8-bit address, internal RAM, indirect addressing mode. This is the first type. Second is 16-bit address, external RAM, indirect addressing mode. The last one is 8-bit address, external RAM, indirect addressing mode. Okay, so these are the major classification. This is the diagram that you need to remember in order to, अगर generally ज़्यादातर सवाल पूछा जाता है 8051 में, mostly आज लास्ट के 3-4 सालों के पेपर में अगर आप देखो तो 2 से 3 बार ये पूछा गया है. So either addressing mode of 8051 is asked और ARM7 का एड्रेसिंग मोड पूछा जा सकता है. दोनों में से कोई एक डेफिनेटली आता है, बट कभी कभी नसीब खराब हुआ था, जैसे लास्ट टाइम पेपर में दोनों में से कोई भी नहीं आया था. ओके, लास्ट टाइम द पेपर वाज प्रीटी वेरी डिफरेंट. ओके, इट वाज अनप्रेडिक्टेबल. थोड़ा न्यूमेरिकल ज्यादा आ गया, उसके अंदर प्रोग्राम ज्यादा हो गया. जनरली वैसा होता नहीं है, बट मोस्टली इट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. प्लीज मार्क इट एज वेरी इंपॉर्टेंट वन. ओके, फाइन. शुड वी स्टार्ट एक्सप्लेनिंग? Yes, sir. Okay, so we'll start with the first one. The first one is called as immediate addressing mode. So immediate addressing mode में क्या होता है? What do you mean by immediate addressing mode? Data कैसे पास होगा? Data direct pass. Data direct pass होगा. कहाँ पे? Within the instruction. So immediate addressing mode में within the instruction I just pass what? Data. In the instruction I pass the data. Okay. So यानी operand जो है वो that is made available as soon as it gets decoded. यानी decode जब आप करते हो, जैसे कि अगर आप opcode लिखते हो, सबसे पहले instruction execute कैसे होता है? How does the instruction get executed? First we do what? Fetching. Second we do decoding. Third we call as execution. So as soon as we fetch the instruction, okay, when we fetch the instruction जब आप fetch करते हो from the memory,
So that instruction are generally in form of what? Are they in the form of assembly language program or in binaries? When we fetch the instruction, how the instructions are stored in memory, in binary or assembly language program? Binary. इट इज स्टोर्ड इन बाइनरी, क्योंकि आप जब कंपाइल कर लेते हो, जब आप असेंबल कर लेते हो, तो वो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में, ऑब्जेक्ट फाइल के फॉर्म में जनरेट होता है, और ऑब्जेक्ट फाइल के अंदर बेसिकली क्या होता है? बाइनरी होता है. तो जनरली जो मेमोरी होती है उसके अंदर आपका जो इंस्ट्रक्शन होता है दैट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ बाइनरीज. So when you fetch the instruction which is in the form of binary, you get the data in the form of, or you get the instruction in the form of binary. Within that binary representation, whatever your data is, that will also come in the form of binary. Okay, so that means as soon as you have fetched your data, जैसे आपने fetch कर लिया, तभी आपको data available हो जाएगा. Okay, so at that time, at that instance only, you will be getting your data. So will it require, do you require any memory access? बाद में आपको memory में फिर से जाके data लेना पड़ेगा या फौरन मिल जाएगा आपको data? Will it be made available to you immediately, or it does require some time to go to memory and fetch the data again? क्या होगा? Will the data be there immediately? Am I audible? Am I audible? Yes, sir. Okay, बहुत लेट जवाब दे रहे हो यार आप लोग. I was about to close this session. Fine. So क्या होगा? डेटा आपको फौरन मिलता है या आराम से मिलेगा? Within the instruction. Come on, tell me fast. Immediately. Data will be made available immediately because जो डेटा है वो आपका बाइनरी के फॉर्म में ही है. तो आप फेच करोगे तो भी वो बाइनरी के फॉर्म में रहेगा. आप उसको डिकोड करने जाओगे तो बिकॉज इट इज डेटा, इट विल नॉट गेट डिकोडेड. वो एज सुन एज जो आपका डेटा रहेगा फेच होके मिल जाएगा. दैट इज व्हाई द नेम इज कॉल्ड एज इमीडिएट. इमीडिएट का मतलब क्या होगा? एज सुन एज यू फेच द इंस्ट्रक्शन, द डेटा विल बी मेड इमीडिएटली टू यू. ओके, सो फॉर दिस we'll be writing some examples. So please write down in each of the addressing mode. You have to write down few examples. So what is the one liner that you can write down about this immediate addressing mode? In this you can write down, in the instruction we pass the data immediately. That is why it is called as immediate addressing mode. Okay, so instruction के अंदर हम लोग क्या पास करेंगे? Data पास करेंगे. Okay, and why it is called as immediate addressing mode? Because as soon as you fetch the instruction, since the data is already present in the instruction, it is made available to us immediately. That is why it is called as immediate addressing mode. Clear with that part? Is it clear? Yes. Yes. Okay, the next is we have to write down the example. The example is move a comma 25h. Okay, move a comma 25h. Okay, so this means I'm moving the data 25 into it. Okay, now 25 has two meaning. 25 can be data also, 25 can be address also. Okay, because 8051 has 8-bit data and it also has 8-bit address also. Okay, so 8-bit कहाँ पे होता है? RAM के अंदर होता है, right? Internal RAM में. So we need to identify कि whether we are talking about data or we are talking about address. Okay, so address और data में differentiate करने के लिए we have to use extra symbol and that symbol is called as hash. Okay, so hash अगर आपने लगाया कोई भी number से पहले, that means that number is nothing but it is data. Okay, और अगर आपने hash नहीं लगाया इसका मतलब वो क्या हो जाएगा? Address हो जाएगा. Is it clear? Is it clear? Yes. So what we are doing right now, we are moving 25h, which is a data, into a register called as A. So A जो register है आपका, which is a 8-bit register. Okay, उस 8-bit के register के अंदर what data are we moving? We are moving 25. So how it will be moved? 2 will be stored over here, so it will be 0 0 1 0, and 5 will be stored over here, 0 1 0 1. So I've performed the operation, which is move A into 25h, the data you are moving into. Is it clear? Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. सर Another, हाँ, क्या किसी को डाउट है? फिर @ कब यूज करेंगे? @ वो मैं आगे बताता हूँ, बट फिलहाल अभी फिलहाल आपको डेटा जो है और मेमोरी है उनके बीच में डिफरेंशिएट करने के लिए वी हैव टू यूज हैश. ओके, @ जो है वो हम डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में या रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, सॉरी इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में हम लोग @ यूज करेंगे. वो आगे की बात है. अभी फिलहाल उसमें डोंट गेट कंफ्यूज्ड, वी आर स्टार्टिंग अ फ्रेश टॉपिक. ओके, सो डोंट टेक अ प्रीवियस जो भी आपने पढ़ा था उसको छोड़ के अभी नए तरीके से पढ़ रहे. ओके,
So move a comma hash 25 ये आपने लिखा. Next you want to perform this operation which is move r1 comma hash 20h. Is it a valid instruction? Is this a valid instruction? Can we do this? Can we do this? Is it allowed? R1 is what? Yes. R1 is what? Register. It is a register present where? Present where? बैंक 0. बैंक 0 बोलो, बैंक 1 बोलो, बैंक 2 बोलो, बैंक 3 बोलो, कहीं पे भी वो प्रेजेंट होगा. लेकिन प्रेजेंट किस मेमोरी में है? We have got 4 different memories. It is present in which memory? इंटरनल. Internal RAM. Okay, so we are talking about internal RAM. So internal RAM के अंदर R1 के अंदर you can store the data 20h. So this 20h is not the address, but it is data. Okay, उसके अलावा we can also perform this operation which is move dptr comma hash 1 2 3 4 h. Can we do this operation? What we are doing over here? What are we doing over here? We are passing or we are storing a data. कितने bit का data है? 16. 16 bit का into a register called as dptr, and that register has a space of कितना space है dptr का? 16 bit. 16. So dptr has two parts. One is called as a dph and other is called as a dpl. Okay, so this operation will do what? dph के अंदर it will store 12 in dph and dpl के अंदर the lower address. So dpl is the data pointer lower. So lower के अंदर it will store 34. Okay, so that is how it will store. So dptr, which is a 16-bit address, 16-bit register, which will hold address of what? dptr will hold address of what? Data or program? Data. It will hold the address of data. So because the generally the address are generally in the form of 16-bit, तो आपको 16-bit का register लगेगा. Okay, so 16-bit का जो register है आपका वो DPTR ही है. उसके अलावा there is another register which is called as PC, but PC को आप directly change नहीं कर सकते. Okay, so only the 16-bit register which is made available in 8051, which can be used as per the programmer or the user, it is DPTR. Okay, so ये तीन एग्जांपल आप लिख करके आप immediate addressing mode के अंदर आप समझा सकते हो. Is it clear? Is the first addressing mode clear to you? Yes. Okay, so what is the first addressing mode? The first addressing mode is the immediate addressing mode. Why it is called as immediate addressing mode? Because at the time of fetching of the instruction, as soon as you fetch the instruction, the data is made available to you. Data फौरन आपको मिल जाएगा because जो data है वो directly instruction में आप pass करते हो, ना कि कोई दूसरे medium के through. Okay, so that is why it is called as immediate addressing mode. Fine. Is it clear? Yes. Okay. Now we'll look into the second addressing mode, the second type of addressing mode. The second type is called as a register addressing mode. Okay, so register addressing mode, why is the name called as register addressing mode? What will do in register addressing mode? Data कैसे पास करेंगे इस केस में? Through register. Through registers. Okay, through registers. So the rule says that we will be passing data, but that data should be present inside a register. Okay, so what we are doing is we are passing a register, and that register will hold the data into it. So that is why the name is called as a register addressing mode. So what you have to write in register addressing mode? In register addressing mode, we pass the operand or data into a register, and that register is passed into an instruction. So that is why it is called as a register addressing mode. Fine with that? Is it clear? Is it clear? Yes. Yes. Okay, so example that you can write down are, so move a comma r0, move a comma r0. What you are doing? What you are doing over here? R0 is a register. You're moving the data from R0 register into a register called as Accumulator. accumulator. Okay. उसके अलावा there is another register called as another instruction that you can write down is move R1 comma A. What it is doing? What it is doing? It is moving the data from where to where? Accumulator register. Accumulator to R. R1. Okay.
accumulator to R1. So this is valid, this is valid. The next instruction that we can write down is move R0 comma R1. What is happening over here? Where to where the data is moving? R1 to R0. R1 to R0. Both are 8-bit register. Is it valid or invalid? Valid. It is valid, but this instruction is not allowed in 8051. Okay. In 8051, move of rx comma ry. Okay, rx comma ry का मतलब यानी कोई भी एक r रजिस्टर से दूसरे r रजिस्टर में you cannot move the data. It is invalid instruction. Please make a note of it. Okay, between two registers, between two r registers, the transferring of data is not possible using register addressing mode. Okay, please make a special note of it. Okay, so ये क्यों होता है? Why is the reason? Because move R0, R1 के लिए एक set of opcode होगा. Will there be a opcode for this? एक opcode होगा इसके लिए? Will there be a opcode for this? Move R0, R1 होगा कि नहीं होगा? इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन के लिए होगा ना कुछ तो इसका. Move R0, R1. So definitely move R0, R1 there will be opcode. Similarly, move R0, R2 के लिए भी opcode होगा. Will there be another opcode for R2 also? So is for move, R0, R3 के लिए भी होगा. So is move R0, R7 के लिए भी होगा. वैसे ही move R1, R0 के लिए होगा, R1, R2 के लिए होगा, R2, यानी हर R के लिए there will be different set of move operation. सबके लिए अलग अलग move operation होगा. So यानी there are total 8 register in a bank. 8 register का different permutation and combination जो आप करते हो, after having different combination, there will be total 64 combinations that will be made available. यानी R0 से R1 में move करना है, R0 से R2 में move करना है, R0 से R3 से करना है, R0 से R7 तक करना है, R1 से R0, R1 से R2, R1 से R3, R1 से R7, R2 से R1, R2 से R0, R2 से R3, R2 से R4, R2 से R7, फिर R3 से R0, R3 से R1. तो हर एक के लिए आपको opcode generate करना पड़ेगा. Okay, so basically for a single move operation you have to generate 64 different opcode only between the registers, only between the bank registers. Okay, so is it a good step or it is a bad thing? You need to avoid this, right? अगर decoding अगर सिर्फ move के लिए बढ़ जाएगा, इसका मतलब add के लिए भी 64 लगेगा, divide के लिए भी 64 लगेगा, multiply के लिए भी different आपको 64 opcodes लगेंगे. So is it good or bad? Do you require that much of opcodes? You want to reduce the main motto of having a fast processor. Fast processor तभी बन सकता है जब आपका opcode कम होगा. Okay, so in order to reduce this opcode, what 8086 that 8051 says that कि हम rx, ry ऐसे instruction को हम support ही नहीं करेंगे. We will not support such type of instruction. तो इसका मतलब अगर by chance अगर आपको data move करना है from R0 to R1, ये कैसे possible है? How to do this? Using address. Using address. Okay, very good. That is the third option. Okay, as third addressing mode that we'll be discussing, which is direct addressing mode. But अभी तक जो आपने पढ़ा उस हिसाब से कैसे कर सकते हैं? Using another register called as accumulator. So you can have an intermediate register called as accumulator. पहले क्या करोगे? R0 का डेटा पहले accumulator में डालोगे, उसके बाद accumulator से डेटा जो है वो R1 में डालोगे. So basically what you're doing is moving the data from R0 to R1. समझ में आया? Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. So just remember, just write down this particular point. This is not supported in 8051. Is it clear? Should we move on? Yes. Okay. So the next addressing mode that we'll be looking is called as, the third one is called as direct addressing mode. Okay. So what is direct addressing mode? Here the data is directly passed or address of the data is passed. What is passed over here? Address of the Address of the data. So instead of passing the data, we pass the address of the data. Okay, so this address will have a data stored into that location, and from there the data can be fetched and can be used for performing the operation. Okay, so what is direct addressing mode? Direct addressing mode is a way of passing an operand where the instead of passing the data direct itself, will be passing its address. Okay,
So that is why it is called as a direct addressing mode, because the data is directly made available to the instruction. Okay, so direct addressing mode का जो example है, the example that you can give of, and especially अभी तक जो दोनों हमने addressing mode पढ़े हैं, which is immediate addressing mode as well as register addressing mode, ये दोनों हम लोग RAM के लिए पढ़ रहे हैं. Okay, all these the addressing mode that we are discussing is only for internal RAM. Okay, is it clear? Similarly, over here, direct addressing mode is also for the internal RAM. Why RAM? Why not ROM? Why not ROM? Why we are dealing with RAM only? क्यों हम लोग RAM से ही ले रहे हैं data? Data is present in Because RAM. data is present in RAM, as simple as that. Okay, so ROM का लेना देना नहीं है हमारा कुछ, because ROM has a code memory, it has code into it. So because we just want to pass data, so data store जो हो रहा है वो RAM में हो रहा है. Okay, तो आप external RAM में भी use कर सकते हैं. External RAM में कैसे use कर रहा है वो हम आगे वाले addressing mode में पढ़ेंगे. But फिलहाल addressing mode 3 तक all this work will be happening on the internal RAM plus SFR address. Okay, plus SFR में भी आप SFR में भी डेटा को स्टोर कर सकते हैं. Okay, so A is nothing but it is an SFR, B is nothing but an SFR, उसके अलावा PSW is an SFR. so आप ये जितने भी आपके एड्रेसिंग मोड थे वो इंटरनल रैम और SFR पे वर्क करेगा. Is it clear till now? समझ में आ गया यहाँ तक? Yes. Okay, the example that I can give, I'll just write down the example over here. The example that I can give is, I'll perform the operation called as move, okay, A comma, and I'll pass 25H over here. So what is the meaning of this? Am I passing the data or am I passing the address? Address. Address. So there is a difference between hash 25H and 25H. If there is a hash, it means we are passing the value into A. If we are passing 25, it means we are passing the address. And this address is present in which memory? Internal. Internal RAM. It is present in internal RAM. So within the internal RAM, आप 25H लोकेशन पे जाओगे और वहां पे जो भी डेटा होगा उसको कहां पे लेके आओगे? Where you will bring that data into the register called as Accumulator. accumulator. Clear with that part? समझ में आ गया? So this is a valid instruction. Okay. Next is move 25H, A. Can I do the vice versa also? क्या मैं vice versa कर सकता हूँ? So what is happening over here? Accumulator का जो data है that I'm storing into a location called as, or location pointed by a 25H address. Again 25H address is present in internal RAM. उस लोकेशन पे जाके मैं क्या करूंगा, A का जो भी डेटा है, A के अंदर जो भी डेटा स्टोर है उस डेटा को मैं वहां पे जाके स्टोर कर दूंगा. Okay, so again this is a valid instruction. Okay, so you can do the vice versa also. यानी अगर आप मेमोरी में स्टोर करना चाहो तो आप मेमोरी में स्टोर कर सकते हो, अगर आप मेमोरी से रजिस्टर में करना चाहो आप ये कर सकते हो. Is it clear? Is this example is clear to you? Is it clear? Yes. The third example that I can give is move 30H comma hash 30H. What is the meaning of this? Tell me fast. The meaning? Passing data 30 into location 30. Location 30H. Okay, so what we are doing is, this is the data. So that data which is 30H I can store into a location given by 30H. Okay, and this 30H will be present in the internal RAM. Again it is a valid. Okay, vice versa of it is not valid. Okay, so मैं hash 30H पे data को store नहीं कर सकता. Okay, because 30H ये जो आपको होता है that is your destination. So destination cannot be a data, right? So this is invalid. It is not allowed. We cannot do this. Is it clear? समझ में आया क्यों गलत है ये? Is it clear? Yes, sir. Yeah. So the fourth example that we have seen, that is not allowed. Next is move 01 H comma 00H. Tell me, is it allowed or valid or invalid? No. No, in case of 8086. In case of 8086, between any memory location, you cannot perform the operation. But valid in case of 8051. 8051 mein you can perform the operation between the different memories. Why? Because
The memory are present on the chip itself. Okay, उसके लिए आपको कोई अलग जगह पे जाना नहीं पड़ेगा. You don't have to go into some other sort of memory. बाहर जाकर के प्रोसेसर से बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. It is present within the microcontroller itself. So that is why it is allowed. Okay, so within the memory it is allowed. So as you can see, 01H is the address of what? Do you guys remember this address of RAM? 01H is the address of whom? Can you go back to the diagram of RAM structure? RAM structure में जाके वो diagram देखो. 01H किसका है? The internal RAM structure. It is for Bank 0. bank 0 में कौन से register का? R1. It is R1 and this is R0. R0. So what we are basically performing is move R1 comma R0. But earlier this was invalid. We cannot perform this. This is only valid if you're using the memory address. Okay. So between the register you can transfer the data, but that is only valid by using the memory address. Okay, by not using the memory name. क्योंकि अगर आप नाम use करोगे, it will induce large number of opcode. क्योंकि every name will have the respective opcode, but the address will be stored directly because it is in the form of binary. You don't have to do anything. वो ऑटोमेटिकली बाइनरी में है, आपको उसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है. आपको जो वर्ड में लिखा है सिर्फ उसको आपको ऑपकोड में जनरेट करना है. यानी मूव R1 R0 का एक बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होगा. सिमिलरली मूव R1 R2 का होगा. ऐसे 64 बाइनरी कोड होंगे, which is a huge task. उससे बेटर क्या है, आप क्या करो, मूव 01,00 आप कर लो, मूव 01,02 कर लो, मूव 01,03 कर लो. What is the common thing in this? इसमें सिर्फ और सिर्फ मूव का ऑपकोड होगा, इसमें भी मूव का ऑपकोड होगा, इसमें भी मूव का ऑपकोड होगा. बाकी सब जो है वो नंबर्स है, एंड नंबर्स आर जनरली स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ बाइनरीज. तो इसके लिए आपको ऑपकोड लिखने की जरूरत नहीं है. ऑपकोड सिर्फ मूव का होगा. सो सिंस इन एवरी इंस्ट्रक्शन वी हैव गॉट ओनली वन ऑपकोड, एक ही इंस्ट्रक्शन है व्हिच इज मूव, तो नेचुरली ऑपकोड भी एक ही होगा. सो बाय यूजिंग द नेम इट वुड हैव क्रिएटेड 64 ऑपकोड्स. So that can be replaced by giving them the memory names, okay, or the memory address. So that is why R1 and R0 or all the registers are given the memory address in order to reduce the opcode. Is it clear? Is this clear? Yeah. Okay, so basically R1 और R0 जो है, या RX या RY, उनके बीच में अगर आपको मूव करना है, ऐड करना है, डिवाइड करना, सब्ट्रैक्ट करना है, एंड करना और करना है, that is not at all possible, but it is possible only by using the address. So you can perform the operation between the different memory location. It was not allowed in 8086, but it is allowed in 8051 because in 8086 memory location was, or the memory was present outside the processor. Over here the memory is present within the chip. That is why it is allowed. Fine with that? Is it clear? Yes, Okay. sir. Last one is, the last example that I can give is move A, 80H. A, 80H. What is happening? Data location of ATH is moving into accumulator. Okay, so where is 80H location present? Out of internal RAM. Out of internal RAM. So it is not present in internal RAM, but it is 80H is nothing but it is called as port 0. So port 0 का को आप identify कर सकते हो with an address of 80H. So what it is doing is that it is copying the content of port 0 into our accumulator called as A. Is it clear? So this is a valid instruction. You can use any SFR, you can use any RAM, you can perform the respective operation. But the only concern that you can, or the concern that you have to make sure is that between the memory register, between the registers or the register bank that we have in RAM, in that between them the operation is not possible, but it is only possible by using the respective address. Is it clear? Is it clear? Yes, sir. Okay, so please note down these 5 instructions as an example. Move A, 25H, move 25H, A, move 30H, #30H, okay, then move 01H, 00H, and move A, 80H, okay. Just write down these 5 examples which are the valid example. You cannot do this step, okay, that is invalid. This one is invalid, okay. Rest all are valid.
Done with that part? Should we move on? Yes. Okay. The next addressing mode or the addressing mode number 4 is called as indirect addressing mode. Okay. Indirect addressing mode में क्या होता है? What we do? We get the address directly or indirectly. We get the address directly or indirectly. Indirect. Indirect. Indirectly. From where? From where we get the address? The address will be stored in register. Okay. So instead of getting the address directly, what we can get is ये जो एड्रेस होगा वो किसी रजिस्टर में आएगा और रजिस्टर के अंदर से हम पास करके इंस्ट्रक्शन में लेंगे. सो विद इन द इंस्ट्रक्शन विल बी हैविंग द रजिस्टर. उस रजिस्टर पे डेटा नहीं है, उस रजिस्टर के अंदर एड्रेस है. उस एड्रेस पे जाके आपको डेटा को फेच करना पड़ेगा. ओके, सो इट इज अ लेंथी प्रोसेस. इन इंस्ट्रक्शन विल बी हैविंग द रजिस्टर. Register does not have data. Register have address. You have to go to that address. On that address, you'll get the data. Bring that data back to the processor, and you can perform the operation. Is it clear? Is indirect addressing mode clear to you? Yes. Okay. So over here, the register holds the address, and address holds the data. Okay, so within the address we have data, and that address is present in the register, and that register is passed into an instruction. Okay, so we can give an example. The example that you can give is इसके अंदर there are 3 different types. So first we'll take the first type of it. The first type was what was the first type? 8-bit address. Internal RAM indirect addressing mode. Okay, इसका मतलब क्या है? As you can see over here, इसका मतलब it will be performing operation on internal RAM. Okay, और जो एड्रेस होगा वो 8-bit का होगा. बराबर ना? बराबर? Yes. Okay, so the example that I can give over here is move a comma @ R0. Move a comma @R0. Okay, अगर मैं मान लो मैं @ नहीं लगाता, अगर मैंने सिर्फ लिखा होता move a comma R0, इसका मतलब what was happening? Register. इसका मतलब R0 के अंदर क्या होगा? डेटा या एड्रेस? Address. In this case, it will be R0 will be having what? Data. If I write @ over there, इसका मतलब R0 will have what? Address into it. Is it clear? Is it clear? Yes. Okay, so that is the only difference between direct and indirect addressing mode. So what we can do is, instead of passing the data into the register, we pass the address into the register. वो रजिस्टर पे जो आपका एड्रेस होगा उस लोकेशन पे जाके आपको डेटा को फेच करना पड़ेगा और फिर उसको मूव करना पड़ेगा इनटू अ रजिस्टर कॉल्ड एज A. So what we are doing is that R0 के अंदर there will be an address. Okay, R0 के अंदर there will be address. उस एड्रेस के अंदर डेटा, उस लोकेशन पे जाके आपको डेटा लेना पड़ेगा और वो लोकेशन कहाँ पे होगा? Where will be the location? Internal RAM, external RAM, internal ROM, external ROM. Where will it be? Internal RAM. Internal RAM, because we are talking about only 8-bit address. Okay, so 8-bit address is present only inside the internal RAM. Okay, so internal RAM पे जो भी आपका डेटा होगा, जो भी डेटा स्टोर होगा उस एड्रेस पे, उस डेटा को आपको फेच करना पड़ेगा, उसको फिर जा करके आपको एक्यूमुलेटर में डालना पड़ेगा. Is it clear? Is this example clear? No. Okay, I'll repeat it again. Indirect addressing mode में what is happening in indirect addressing mode is, I'll just erase it. Okay. What is happening in indirect addressing mode is that अभी तक हम क्या कर रहे थे? डेटा को हमें चाहिए. बेसिकली एड्रेसिंग मोड का मतलब क्या है? हमें डेटा चाहिए बेसिकली. सो डेटा कहाँ पे प्रेजेंट है? इनसाइड द रैम एज वेल एज रोम. ओके, रैम और रोम के अंदर हमारा डेटा प्रेजेंट है. सो ये जो डेटा है हमें लाने के लिए 2 ऑप्शन है. आप या तो रैम से उठाओ या तो रोम से उठाओ. रैम से उठाने के लिए इंटरनल रैम से उठाओ या इंटरनल रोम से उठाओ. इंटरनल रैम एंड एक्सटर्नल रैम.
because data is generally present in RAM. Okay, so RAM से अगर आपको उठाना है, अगर इंटरनल RAM से उठाना है तो उसके लिए जो एड्रेस होगा वो कितने बिट का होगा फॉर इंटरनल RAM? 8 bit. फॉर इंटरनल RAM इट इज 8 बिट. सो इसका मतलब हमें एक एड्रेसिंग मोड डिफाइन करना पड़ेगा. अगर मुझे इंटरनल RAM से उठाना है तो उसके लिए 8 बिट का एड्रेसिंग मोड पास करना पड़ेगा. So that is called as 8-bit address internal RAM. इसका मतलब क्या होगा? ये जो addressing mode है आपका, the first type of indirect addressing mode, it supports only for internal RAM. It only supports internal RAM. उसके अलावा और कोई RAM को support नहीं करेगा. Okay? So इसका मतलब जो इसका address होगा internal RAM का वो 8-bit का होगा. कितने बिट का होगा? 8-bit का होगा. So 8-bit का एड्रेस जो है आपका वो कितने बिट के रजिस्टर में आप डाल सकते हो? 8 बिट के रजिस्टर में आप डालोगे. सो 8 बिट का रजिस्टर कौन कौन सा आपके पास R0 है, R1 है, R2 है, R3, R4, R7 तक है. ओके, वी हैव गॉट डिफरेंट रजिस्टर्स दैट यू हैव, बट देयर इज आल्सो अ रूल. ओके, द रूल सेज दैट ओनली R0 and R1 will be used for storing the address. Okay, that is a special rule. Okay, so सिर्फ और सिर्फ R0 और R1 ही आपका रजिस्टर है जो आप एड्रेस जिसके अंदर आप डाल सकते हो और वहां से उसको यूज करके आप डेटा को फेच कर सकते हो उस लोकेशन से. So how to give the example for this? The example is move a comma @R0. So @ means what? It is the address which is there in R0. अगर ये @ नहीं होता इसका मतलब क्या होता? R0 के अंदर डेटा होता और वो डेटा जो है वो a के अंदर जा रहा होता. Is it clear? Is it clear now? Yes, sir. Move a comma @R1. इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब क्या होगा? R1 में, let's say this is my R1 register. Okay, R1 register has some data into it. Okay, R1 has some data into it. Let's say 20. Okay, so 20 can be written down as 0010. Okay, 0000. Okay, मैंने लिखा move a comma @R1. Okay, so this 20 that we are talking about, will it be data or will it be address? The data or address. 20 act कैसे करेगा? Will be acting as an address or it will be acting as a data? Address. It will be acting as a data. तो ये क्या करेगा? RAM के पास जाएगा. RAM has starting address from 00 to 7FH. वो जाएगा 20 पे, देखेगा कि 20 एड्रेस पे क्या डेटा शोर है. So let's say यहाँ पे 25H है. Okay, so ये जो 25H होगा, the data which is stored at 20th address, वो 25H का डेटा को लाएगा और एक्यूमुलेटर में डालेगा. अब एक्यूमुलेटर के अंदर आपका 25 डेटा आ जाएगा, ना कि 20. Is it clear? Is it clear? Yes, sir. So 25 यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0010 और यहाँ पे 0101. So what we are getting over here is R0 or R1 will have your address and on that address you'll be getting the data. और ये address कितने बिट का होगा? 8 बिट का. So since we are talking about 8 बिट का address, that means we are talking about which memory? Internal RAM or external RAM? Internal RAM. Internal RAM. Is it clear? Is the first type of addressing mode clear to you? Yes, sir. Okay, now we'll go to the second category of indirect addressing mode. I will just erase it. कितना टाइम बचा है? 15 minutes. Okay, so we'll just finish it up. अब ये हो जाएगा मेरे ख्याल से. ओके, अभी तक जो हमने एड्रेसिंग मोड पढ़ा है, अभी तक जितने भी, ओके, फ्रॉम 1 2 3 4 का फर्स्ट तक सब के सब इंटरनल रैम पे काम कर रहे थे. अब जो पढ़ेंगे दैट विल वर्क ऑन एक्सटर्नल रैम. सो एज यू कैन सी दी हेडिंग आल्सो हमने डिफाइन किया था इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में. सेकंड वाला जो है दैट इज अ 16 बिट. क्या नाम था? व्हाट वाज द नेम ऑफ इट? 16 bit address, external RAM. External RAM. So 16 bit address, external RAM, indirect addressing mode. Okay, so इसका मतलब 16 bit address की बात चल रही है. 16 bit address कौन से RAM में होता है? external RAM में होता है. ठीक है, so ये कैसे वर्क करेगा? How it will work? So the instruction is, listen carefully, the instruction is move, not only move, it is move X. Okay, X means external RAM. We are working on external memory. Okay, so move X. Okay, move होता तो will be working on which memory? Internal RAM.
for each memory there will be different set of instructions. So since we are working on external RAM, the operation will be MOVX. Okay, MOVX, उसके बाद a comma @ we need to pass कितने बिट का एड्रेस? 16 बिट का, राइट? 16 bit. 16 बिट का एड्रेस कहाँ पे है? कौन सा रजिस्टर होल्ड कर सकता है 16 बिट का एड्रेस? We have to store a 16 bit address into it. ऐसा कोई रजिस्टर है जो 16 बिट का है आपका 8051 में? DTPR. DPTR. DTPR नहीं है, DPTR. DPTR. It is data pointer. Okay. So we'll be storing first the data into DPTR. That data will become the address. उस एड्रेस पे जो भी आपका डेटा होगा that will be come into accumulator register. Is it clear? So let's say मैंने DPTR के अंदर स्टोर किया है. I've stored DPTR into DPTR. I've stored 1 2 3 4 H. Okay, 1 2 3 4 H is what? Data or address? Data. Address. It will be address because I've written @ over here. अगर @ नहीं होता इसका मतलब वो क्या होता? Data होता. So because it is written @ over there, it means this 1 2 3 4 H is not a data but it is address. Okay. अब ये जाएगा और कहाँ पे जाएगा? एक्सटर्नल रैम के पास जाएगा because external RAM has how many address? कितने बिट का एड्रेस है? 64. It is 16 bit का एड्रेस. So 16 bit का एड्रेस is from 000H to कहाँ तक होगा? एक्सटर्नल रैम कहाँ तक होगा? FFFF. Okay, so it will be from 000H to FFFH. Okay, so वहां पे जाएगा, it will go search for 1 2 3 4 H location. उस लोकेशन पे जाएगा. उस लोकेशन पे कितने बिट का डेटा मिलेगा? On every location, what is the data that is being stored? It is again 8 bit का डेटा. So 8 bit का डेटा fetch करेगा और fetch करके कौन से रजिस्टर में लेके आएगा? DPTR. Why DPTR? There is another register which is destination, which is called as accumulator. तो कहाँ पे लेके आएगा? It will be storing in Accumulator. accumulator. I'll repeat again. How does this step work? MOVX a @DPTR में क्या होगा? It will first check the content of DPTR. DPTR के अंदर 1 2 3 4 है. Because there is @ written over here, इसका मतलब 1 2 3 4 H is a address. It will go to the external RAM because 1 2 3 4 H is address of data. And since that data has address of 16 bit, इसका मतलब वो कौन से RAM में होगा? Internal RAM या external RAM? External. एक्सटर्नल रैम में. सो एक्सटर्नल रैम में जाएगा. एक्सटर्नल रैम का जो एड्रेस है वो लाइज फ्रॉम 0000 टू FFFH के बीच में उसका एड्रेस लाई करता है. इट वुड सर्च फॉर द 1 2 3 4 H लोकेशन. व्हाटएवर डेटा व्हिच इज स्टोर्ड एट दैट लोकेशन एट 1 2 3 4 H लोकेशन, दैट वुड बी ब्रिंग एंड विल बी स्टोर्ड इनटू accumulator. Is this step clear? Is this step clear? Yes. Yes, sir. Okay, so instead of passing the data directly, we are passing the data into a register, and that register for storing a 16-bit address will be called as DPTR. So DPTR is the only register which will be storing that 16-bit address. Is it working clear? Yes. Okay. What about this instruction? Will it be valid? MOVX, @DPTR, A. Will it be valid? This is a valid instruction. Will it be valid? Can we move the data from accumulator into the external memory? Can we also do that? कर सकते हैं ना? Accumulator के अंदर 8 बिट का डेटा है. DPTR जिस एड्रेस पे पॉइंट करेगा वहां पे कितना डेटा आप स्टोर कर सकते हो? 8 बिट का. So will it be valid? Yes. It will be valid. So what is happening? Accumulator का जो भी डेटा है, that data will be stored in DPTR or will be stored in the address pointed by DPTR. कहाँ पे स्टोर होगा? Address DPTR, pointed by DPTR. एड्रेस पॉइंटेड बाय Address. बराबर. सो एक्यूमुलेटर का जो भी कंटेंट होगा वो डीपीटीआर में नहीं जाएगा बिकॉज डीपीटीआर तो 16 बिट का रजिस्टर. इट विल बी stored into the address which is given by the DPTR register. So DPTR में जो भी कंटेंट होगा वो उस एड्रेस पे जाके वहां पे जाने के बाद 8 बिट का जो एड्रेस है जो एक्यूमुलेटर से आया था उसको जाके वहां पे पेस्ट कर देंगे. So that is the second example that you can get. So the two examples that you can have is MOVX a @DPTR. Second is MOVX @DPTR, A. So vice versa is also possible. Is the second subcategory of indirect addressing mode clear to you? Is it clear?
Yes. Next is the third subcategory and the last subcategory of indirect addressing mode. What is the title of it? 8-bit address. External RAM. We are talking again about external RAM. फिर से हम external RAM की बात कर रहे हैं. Okay, 8-bit external RAM, indirect addressing mode. Okay, so ये जो है this is the third category. इसका मतलब क्या होगा कि we are dealing with external RAM only. लेकिन external RAM का memory का जो वो है साइज है, व्हाट इज द साइज ऑफ द मेमोरी? मेमोरी एड्रेस बस का साइज क्या है इन एक्सटर्नल रैम? 8 bit. एक्सटर्नल रैम, वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सटर्नल रैम. एक्सटर्नल रैम के अंदर जो मेमोरी है, जो एड्रेस बस है, उस एड्रेस बस का साइज क्या है? 16 bit. इट इज 16 बिट. बट व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज कि हम उसको 8 बिट का, यानी 8 बिट के अंदर ही उसको फिट करने की कोशिश करेंगे. ओके, सो ओनली 8 बिट विल बी कंसिडर्ड. ऊपर वाला जो हायर 8 बिट है दैट वुड बी मेड एज 00. ओके, यानी नीचे के एड्रेस, यानी लेट्स से अगर आपका देयर इज एन एड्रेस 0001. ओके, सो ये जो है आपका 8 बिट है, ओनली दैट बिट विल बी कंसिडर्ड एंड सारे के सारे जो अपर आपके हायर bit byte है that would be made as 00. So what would be the starting address? Starting address would be 00. The last address that it can go up to, the last address it can go up to, FF. it will be FF. Okay, so यानी जो external RAM है, when we are talking about external RAM, by using this addressing mode I am only allowed to access only 256 unique location. Only 256 location is only possible, but still I can do that. Okay, it is a facility given by the Intel microcontroller. Intel ने ये facility दिया है. Okay, क्या facility दिया है कि instead of using 16 bit का address, I can still use 8 bit का address, और ये 8 bit के address को use करके मैं external RAM को access कर सकता हूँ. I can still access the external RAM by using 8 bit का address. Okay, but वो जो एक्सेस कर पाओगे वो आप क्या करोगे, 8 बिट का एड्रेस ही आप एक्सेस कर पाओगे. जो हायर 8 बिट है उसको आप 00 करोगे. सो अगर आप हायर एड्रेस को अगर आप 00 करते हो तो आप कितने एड्रेस, कितने लोकेशन को आप यूनिकली फॉलो कर आइडेंटिफाई कर सकते हो? फ्रॉम 00H to FFH तक आप यूनिकली लोकेशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. एंड दैट इज हाउ मेनी लोकेशंस? 256 लोकेशन. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? I will take an example, and with the example I think this will get clear to you. Okay, so the example is move a comma at the rate r0. What is happening over here? Just tell me. R0 has data or address? Address. R0 has an address. कितने bit का address? 8 bit और 16 bit? 8. It will be a 8 bit address because R0 is a 8 bit register, so उसके अंदर जो address होगा वो भी 8 bit का होगा. Okay, that location, when we are talking about 8 bit का address, that location is present where? In the internal RAM or external RAM? 8 bit का address is present in internal RAM or external RAM? Come on, say it. 8 bit address is present in internal RAM or external RAM? Internal RAM. Internal RAM. It is there in internal RAM. So this addressing mode that we are talking about is basically what? It is the first subcategory जो पहला वाला हमने किया था, which is 8 bit address of internal RAM. When we write move x over here, इसका मतलब क्या होगा? Now the address that is being stored inside the R0 will be the lower 8 bit address of the external RAM. Will be the lower 8 bit का address. Okay, जो हायर एड्रेस होगा उसके अंदर आप 00 लगा दोगे. सो लेट्स अज्यूम R0 has 25H stored into it. So ये 25H क्या होगा? एड्रेस होगा या डेटा होगा? R0 has 25H into it. Will it be address or data? Address. It will be address. So इस 25H को since हमने इंस्ट्रक्शन से आइडेंटिफाई कर लिया कि इंस्ट्रक्शन इज ऑन इंटरनल रैम और एक्सटर्नल रैम, इट इज मूव एक्स, सो नेचुरली वो किस पे वर्क करेगा? Where it will work on internal RAM or external RAM? External. It will work on external RAM. So हम क्या करेंगे, जो R0 है, R0 के अंदर जो 25H एड्रेस था उससे पहले 2 0 को अपेंड कर देंगे. Okay, so now it will become a 16 bit address. So this 16 bit address, now you can go to
that location, which is 0025H location on external RAM, and you can fetch that data and you can store into A register. Is it clear? Is it clear? Yes. I'll repeat again. ये जो थर्ड सब कैटेगरी है, ये एक फैसिलिटी देता है आपको कि अगर आपका एक्सटर्नल रैम को अगर आपको एक्सेस कर रहा है, वो एक्सटर्नल रैम आप एक्सेस कर सकते हो नॉट बाय जस्ट यूजिंग डीपीटीआर. सिर्फ डीपीटीआर पे आपको डिपेंडेंट नहीं रहना, आप R0 और R1 रजिस्टर को भी यूज करके आप आइडेंटिफाई कर सकते हो उस लोकेशन को. लेकिन देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन. व्हाट इज द रिस्ट्रिक्शन? बिकॉज R0 एंड R1 इज अ 8 बिट रजिस्टर. इसका मतलब आप 8 बिट का ही एड्रेस दे पाओगे, लेकिन एक्सटर्नल रैम का जो एड्रेस होता है वो 16 बिट का होता है. सो हाउ टू fit a 16-bit address into 8-bit register? So what we can do is हम सिर्फ lower byte देंगे, जो upper byte होगा that would be made as 0. Okay, so lower byte जो है वो R0 और R1 में हम address दे देंगे. और by default always if you are using the third subcategory of indirect addressing mode, जो upper byte होगा that would be made as 00, and combination of that address would be will go into the external RAM, and from that location you'll get the fetch the data and you'll be putting into the other register. Is it clear? Is it working clear? Yes. Okay, so if I write move a comma at the rate R1 and move x a comma at the rate R1, what is the difference? The difference is the first one is on which memory? Can you tell me? Internal. It is on internal RAM. Internal RAM has the memory location on each internal RAM has an address of how many bits? 8. 8 bit. Okay, so 8 bit का एड्रेस है, 8 bit का एड्रेस आपने R1 से दे भी दिया, so it is a perfect valid instruction. There is no problem in it. Okay, self explanatory, कुछ भी दिक्कत नहीं है. दिक्कत किधर आ जाती है? इधर आ जाती है. Okay, because it is a movex instruction. Movex का मतलब क्या होगा? It will be working on which memory? External. External. But external memory has the size of the address bus of external memory will be, what is the size of the address bus? 16. It is 16 bit. But हम यहाँ पे R1 रजिस्टर यूज कर रहे हैं उसके एड्रेस को देने के लिए, बट R1 कितने बिट का है? 8 bit. 8 बिट का. तो हम क्या करेंगे? 8 बिट का एड्रेस ले तो लेंगे, उससे आगे के जो 8 बिट है वो क्या करेंगे हम लोग? Append 0. Will append 0. So इसका मतलब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 8 बिट के एड्रेस ही अवेलेबल रहेगा फॉर एक्सेसिंग द एक्सटर्नल रैम. सो ये यानी टोटल कितने लोकेशन को आप एक्सेस कर पाओगे? यू विल बी ओनली एक्सेसिंग 256 लोकेशन, बिकॉज़ दैट एड्रेस दैट R1 और R0 कैन होल्ड इज ओनली फ्रॉम 00 टू FF, क्योंकि वो 8 बिट का ही रजिस्टर है. तो एड्रेस क्या क्या होल्ड कर लेगा? वो 00, 01, 02, 03 FF तक वो होल्ड करेगा. बाकी जो अपर बाइट रहेगा सबको 00 बना करके हम कहां से कहां तक मेमोरी को एक्सेस कर पाएंगे? 00 से 00 FF location तक. Only this part of the memory will be accessed by which instruction? 8-bit address external RAM indirect addressing mode. यानी अगर आप ये वाला addressing mode यूज करते हो, okay, यानी indirect addressing mode में थर्ड सब कैटेगरी अगर आप यूज करते हो, तो आप external RAM के अंदर from 0000 लोकेशन से लेके 00 FFH लोकेशन तक आप यूज कर पाओगे. Is it clear? Yes, sir. Okay, so that was the fourth one. We have got the last one. I think we have exceeded the time. It is exact time right now. 1 minute बढ़ गया. We'll just cover up the last one. Hardly it will take us some time. It will take 2 or 3 minutes, and we'll just finish it off. Okay. We'll finish the whole topic in one go. So the last one is called as, the fifth category is called as indexed addressing mode. Okay, indexed addressing mode. So this is the only addressing mode which will work on code memory. It will work only on code memory. Okay, यानी किसके ऊपर काम करेगा? कौन सी मेमोरी पे? RAM या ROM? It will work on ROM. So this is the only instruction which will work on code memory. और दूसरा क्या होता है कि it stores the address not only in one register but in 2 different registers. ये क्या करेगा? जो एड्रेस है आपका वो सिर्फ और सिर्फ एक रजिस्टर में स्टोर नहीं करेगा, वो 2 रजिस्टर में स्टोर करेगा. इससे पहले जो हमने इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड पढ़ा था उसके अंदर जो एड्रेस था वो सिर्फ और सिर्फ एक ही रजिस्टर में स्टोर था. यहाँ पे एड्रेस जो है 2 रजिस्टर में स्टोर होगा. ओके, सो ओवर हियर आई जस्ट गिव एन एग्जांपल. द एग्जांपल इज मूव सी. द नेम सजेस्ट सी का मतलब किस मेमोरी पे काम करेंगे हम लोग? वी आर वर्किंग ऑन व्हिच मेमोरी? कोड मेमोरी. ओके, सो मूव सी, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे a कॉमा एट द रेट
A plus DPTR. A plus DPTR. What is the meaning of this? कहाँ से data आएगा? The data will come from which location? From which memory? The data will come from which memory? Code memory. The data will come from code memory. There is a doubt in this. Code memory will hold only code. So how come data is coming from that? Doubt आ सकता है ना आपको? So इस code memory में वही data होगा which is made as ग्लोबल डेटा. यानी अगर जैसे मान लो पाई की वैल्यू विच इज 3.14, अगर आप कोई कांस्टेंट स्टोर करते हो, सो कांस्टेंट आर जनरली स्टोर्ड इन दी प्रोग्राम मेमोरी. सो प्रोग्राम मेमोरी में हमेशा आप कांस्टेंट रखते हो. वेरिएबल जो है आप हमेशा डेटा मेमोरी में डालते हो. सो अगर कोई डेटा है आपका जो कि कांस्टेंट है, जो आप चेंज नहीं करोगे, सो वो डेटा आप जनरली कोड मेमोरी में रखते हो. और उसको अगर एक्सेस करना है आपको, तो दैट एक्सेसिंग ऑफ दैट डेटा इज पॉसिबल थ्रू मूव-सी कमांड. सो मूव-सी करके आप कोड मेमोरी पे को एक्सेस कर पाओगे. कैसे एक्सेस कर पाओगे? दैट डेटा विल बी गिवन बाय नॉट ओनली वन रजिस्टर बट विल बी स्टोर्ड इन अ रजिस्टर कॉल्ड एज A एंड अदर रजिस्टर कॉल्ड एज DPTR. समझ में आया? समझ में आया? इज इट क्लियर? सो लेट्स अज्यूम DPTR हैज एन एड्रेस ऑफ 2000 स्टोर इनटू इट. ओके, DPTR के अंदर 2000 स्टोर है. एक्यूमुलेटर में you have 0.5 into it. Okay, so what it will do, it will transfer the data from code memory. Code memory का address क्या होगा? What is the address of the code memory? Can you calculate the address? What will be the address of code memory? 2500. 2005. 2005 होगा ना address? This plus this. It will be 2005. Yes. ओके, 2005H जो है आपका, वो कहाँ पे प्रेजेंट है? इन दी कोड मेमोरी. कोड मेमोरी का स्टार्टिंग लोकेशन इज व्हाट इज दिस इंटरनल कोड मेमोरी, यानी इंटरनल रोम का स्टार्टिंग लोकेशन क्या होता है? इट इज 0000H बराबर. व्हाट इज द लास्ट लोकेशन ऑफ द इंटरनल रोम? Code FH. इट इज 4FH or 0FFFH? It is 0FFFH. 0FFH. Okay, it is 0FFFH. But you look at over here, you find that it is 2005H. Okay, so 2005H का मतलब ये कहाँ पे present होगा? Will it be present in the internal ROM or external ROM? It will be present where? External. External ROM. So external ROM में जाएगा, वहाँ पे 2005H location पे जाएगा. 2005H location पे जो भी data होगा आपका, let's say 25H लोकेशन यहाँ पे डेटा स्टोर है at 2005H लोकेशन, वो डेटा को लाके A के अंदर स्टोर करेगा. So A will get that data. Is it clear? Is it clear? Yes. Okay. So this is one example. The second example that you can give is move C A comma at the rate A plus PC. So you can also use a register called as PC. PC is again a 16-bit register. Hold C, address of what? Next instruction. Address of the next instruction. So address of next instruction plus the accumulator के अंदर जो content होगा उसका address ले करके you can calculate the new address. That new address which is there in the code memory, that would be fetched into the accumulator. Is it clear? Yes, sir. Yes, So sir. इसका यूज क्या है, कैसे करना है, ये एड्रेसिंग मोड का क्या मकसद है, इसका बेसिक रीजन जो है वो हम 7 सेगमेंट एलईडी डिस्प्ले जो है उस जिसके अंदर हम लोग क्लॉक के लिए यूज करते हैं 7 सेगमेंट फॉर डिस्प्लेइंग 0 1 2 3 4 5 6 7. सो वो डिस्प्ले कराने के लिए हम लोग जनरली कोड मेमोरी के अंदर वी हैव द कांस्टेंट व्हिच इज स्टोर्ड ओवर देयर एंड वो हमेशा बार-बार वो डेटा हमें चाहिए रहता है. फॉर एक्सेसिंग दैट वी यूज द इंडेक्स एड्रेसिंग मोड. ओके, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वन. जब भी आप प्रोग्राम लिखोगे इंडेक्स मेमोरी में कुछ ना कुछ कंटेंट आप पहले से डाल के रखोगे ताकि इसको अगर आपको एक्सेस करना है तो फ्यूचर में कोई कांस्टेंट अगर आपको चाहिए तो आपको यूज करना पड़ेगा. सो इट इज इंपॉर्टेंट. डोंट थिंक दैट कि बहुत रेयर है या काम में नहीं आने वाला है. इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन. सो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है और इंडेक्स एड्रेसिंग मोड है व्हिच विल बी लुकिंग इनटू द फ्यूचर कमिंग क्लासेस. इज द एड्रेसिंग मोड क्लियर टू यू? Is the addressing Yes, mode clear? Okay, so how many addressing mode we have in total? 5. 5. What are the names? Tell me 5 fast. First we have Immediate, then we have register, direct, indirect, index. Immediate addressing mode में क्या pass होता है within the instruction? Data or address? What we pass into an instruction? Data is made immediately available within the instruction. In case of register, what we pass into an instruction? Data or register?
or in address? Register. We pass an register. Register hold data or address? Data. It holds the data. Okay, so every combinations are allowed except for the combination called as rx comma ry. So we cannot perform the operation between two memory bank registers. Okay, we cannot do that because for that we will be having 64 different combinations. So for this 64 different combinations, we'll be having 64 different opcodes for each instruction. So 8051 has 111 instructions, so there will be 111 into 64 different opcodes only for the registers. Okay, so that is a very stupid thing to do that. Okay, so what we can do is that 8051 says that it is illegal to use two registers present of or of a bank. So bank के कोई भी register को आप use नहीं कर सकते एक साथ एक instruction के अंदर. Okay, so that is your register addressing mode. Third addressing mode जो है आपका, that is called as a direct addressing mode. In that case, what you are passing, data or address? Address is passed directly or indirectly? Directly. It is passed directly. That is why the name is called as direct addressing mode. Okay, so in order to differentiate between data and address, how to differentiate whether it is data or address? Hash. Hash means, is it data or data? Data. Hash Data. means it is data. So if you're writing move a comma 50h, it means it is 50h is data or address? Address. Address. If you write move a comma hash 50h, it means 50 is Data. Data. Okay. So that is called as direct addressing mode. Okay, so direct addressing mode mein you can perform the operation of move r0 comma r1, but that is by giving the address of r0, not the name. So आप move 01 comma 0 0 करोगे तो उसका मतलब you are transferring the data from 00 location to 01. 00 location is nothing but it is r0 and 01 is nothing but it is r1. So you can transfer between the register, but that is only possible with the help of direct addressing mode. Okay, then we have the fourth category of addressing mode. It is called as indirect addressing mode. Indirect addressing mode is further classified into three different categories. The first one is called as a 8-bit addressing indirect internal RAM indirect addressing mode. Second one is called as 16-bit address external RAM indirect addressing mode, and the third one is called as a 8-bit address external RAM indirect addressing mode. So 8-bit addressing internal RAM यानी indirect addressing mode का मतलब क्या होता है? What do you mean by indirect addressing mode? You're passing data or address. What you're passing? You're passing data or address into the instruction. Address. Address, but that address is directly passed or it is passed through a register? Through a Through register. register. It is passed through a register, and to differentiate between direct and indirect, the register will have @ symbol. @ का मतलब क्या होगा? Register के अंदर अगर @ हुआ तो इसका मतलब there will be register will be holding data or address. Address. It will be holding address. अगर सिर्फ R0 होगा इसका मतलब the R0 will be holding data. Data. If it is @R0, it means it will be holding the address. Clear with that part? So 8-bit address internal RAM क्या बोलता है कि 8-bit का जो आपका एड्रेस है वो आप कोई भी रजिस्टर के अंदर डाल सकते हो और उस एड्रेस पे जाकर के आपके डेटा को फेच करके हम आपके रजिस्टर के अंदर वैल्यू पास कर सकते हैं. ओके, बट द ओनली important thing that you have to notice, the only register that is being supported in 8-bit address internal RAM is, which is the only two register that is being supported for storing the address? R0 and R1. R0 and R1. You cannot use some other register. सिर्फ और सिर्फ R0 और R1 को ही आपको allowed है use करने के लिए for storing the address. Then we have got 16-bit address. 16-bit के address को identify करना, यानी 16-bit address कहाँ पे होता है? Where it will be? Will it be in internal RAM or external RAM? External. It will be there in external RAM. So in order to store or in order to pass that 16-bit address, there is only one register which is applicable, which is allowed in 8051, and that is which register? DPTR. तो DPTR में आप 16-bit का एड्रेस डालोगे, उस 16-bit के एड्रेस पे आप जा करके उस लोकेशन पे जाके आपको जो डेटा मिलेगा वो डेटा आप एक्यूमुलेटर में या कोई और रजिस्टर में आप उसको मूव कर पाओगे या ऐड कर पाओगे, सब्ट्रैक्ट कर पाओगे, डिवाइड कर पाओगे. Okay, so that is 16-bit address external RAM indirect addressing mode. The last one is called as 8-bit address external RAM indirect addressing mode. So this is the special feature given to the Intel 8051. ये क्या बोलता है कि we can still be able to access the external RAM by using only the lower 8-bit address. तो हम क्या करेंगे, lower 8-bit address जो है वो R0 और R1 से लेंगे और जो higher address है that will append as 0. 0. Okay, so that is why we can still be able to access the external RAM, but only 256 location of the external RAM. We cannot access the overall location of external RAM by using 8-bit address. For using the whole location or for using the whole RAM, we have to use a 16-bit address external RAM indirect addressing mode.
But for using only external RAM for 256 location, we can still use 8-bit address external RAM indirect addressing mode location. Is it clear? Yes, sir. Is it clear? Okay. In case of indirect addressing mode, both in 8-bit internal RAM as well as external RAM, दोनों के अंदर जो register support होगा वो R0 और R1 होगा. Okay, दोनों के अंदर. Okay. Now the last one is called as the indexed addressing mode. Indexed addressing mode is the only addressing mode which will work with code memory. So code memory is nothing but is your internal ROM or external ROM. So for working on that, your address has to be divided into two different registers. One of the register will be A register, and another register can be either DPTR or PC, because the address of the external RAM or external ROM or internal ROM is 16-bit. So 16-bit के लिए हमें 16-bit का register use करना पड़ेगा. So 16-bit का register is DPTR and PC. So either of them you can use it. And A will give you an offset. So अगर आपको जहाँ पे भी जाना है, जिस लोकेशन पे जाना है, उस स्टार्टिंग लोकेशन से अगर आपको कोई भी ऑफसेट लोकेशन पे जाना है, you can give through accumulator. Is this step clear? Is the different addressing mode clear to you? Yes, sir. Yes, sir. Thank you guys. Thank you so much. Sorry for taking your I think कितना ज़्यादा टाइम ले लिया, 15 मिनट ले लिया एक्स्ट्रा. Sorry for taking your extra time. Okay. Anybody has any doubt? Does anybody has any doubt? किसी को कुछ पूछना है? No. Okay, so I'll be posting. मैंने कल पोस्ट नहीं कर पाया था क्योंकि मेरी तबीयत खराब थी. अभी भी थोड़ी तबीयत खराब है मेरी, बट वो जनरली रात तक वापस बुखार चढ़ जाता है. बट स्टिल आई हैविंग वायरल फीवर, तो ठीक है. I'll be posting mostly by tomorrow और आज रात तक अगर